हेलो एवरीवन। सो आज आम डिस्कस करवा जो प्लॉटिंग ऑफ फंक्शंस रो सेकेंड पार्ट। सो आम पूर्व क्लास रे किसी क्वेश्चंस को डिस्कस करथिले। सो आज बाकी किसी क्वेश्चंस डिस्कस करवा। तो हाउ टू प्लॉट ऑल दीज फंक्शंस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो गुड़ा आम यूज करथिले ताको स्टेप बाय स्टेप प्रथम लिखि नेबा कि what will be steps. So one will be first of all check the type of functions, are they even or odd. So check type of functions, even or odd. So how can we check it? Like f of minus x, if it is f of x, then the function will be even. And if f of minus x is f of minus f of x, then this function will be a odd function. So if the function is a odd function, then that will be symmetric function. And if it is if the function is an odd function, then that will be an asymmetric function. Whereas if the function is even, then that will be symmetric function. Then step 2, like we have done y equals to f of x, then आम चेक करवा कि एट x equals to 0 y रो वैल्यू केते, एट x equals to minus infinity and infinity y equals to केते. देन आम जो प्लॉट को इमेजिन करने इजी हम जदि आम इंटरमीडिएट वैल्यू किसी नहीं पारिबा इफ पॉसिबल. Then study that the function is increasing or decreasing with x. Then ये सब स्टेप्स को यूज करिकी आमे प्रेडिक्ट करि परिबा कि फंक्शन केमिति होबो. सो या को देखिबा आमे या को केमिति आमे प्लॉट करि परिबा. तो सिंपली ये कांसेप्ट जदि जीवा आमे धरा जाऊ एट x equals to 0 y will be 0, at x equals to infinity y will be infinity, at x equals to minus infinity y will be infinity. So it will be like so at x equals to 0 y also 0, that is this is x, this is y. So if at x equals to 0 y also 0, this point, at x infinity y infinity at this side, at x minus infinity y infinity this side. And if we will check any intermediate value between 0 and infinity minus infinity of x and 0 to plus infinity of x, then we can predict it like this graph will be smoothly decreasing and this will be increasing. So simply we can say it as this is the graph of a parabola. तो आम पैराबोलार इक्वेशन केमती लिखिपर कि y इक्वल या आम जब एमती लिखा कि y माइनस 0 एंड x माइनस 0 होल स्क्वायर, देन ये जो वैल्यू ये आसला ये दीटा आमको वर्टेक्स रो इंडेक्स विषय कही था. तो यहाँ हूँ 0 0, तो ये वर्टेक्स हम 0 0.
सो सिंपली आम कहीपर कि गोटे पैराबोलार इक्वेशन होची एटा कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जिते बड़े कि तार वर्टेक्स होची एट ओरिजिन। तो यहाँ गोटे सिंपली पैराबोलार इक्वेशन थिला जार ग्राफटा मोर ये भाया हम। तो यहाँ हूँ बेसिक ग्राफटा गोटे या यूज करके आमर बहुत ग्राफ अच्छे यहाँ जमी गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ आसो। सो आम बेसिकली या प्रथमे पैराबोला इक्वेशन यूज करिकी सॉल्व करने चेष्टा करवा। सो टू नो द वर्टेक्स फर्स्ट कौन करवा कि या आम एक्स माइनस समथिंग स्क्वायर एंड या वाई माइनस समथिंग ये फॉर्म रे कन्वर्ट करने को चेष्टा करवा। सो दैट आम ये दुईटा वैल्यू जब जापर आम जापर कि वर्टेक्स रो इंडेक्स कौन। तो या आम केमती लिखिपर या जदि आम लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और आम या जदि आम एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर रो फॉर्म रे आने चेष्टा करवा तो प्लस 4 है तो गोटे माइनस 4 लिखा। सो दिस इज माइनस 5 एंड यहाँ जो माइनस 9 या ये साइड को नहीं आसो लेफ्ट साइड। तो y प्लस 9 इज एक्स माइनस 2 रो होल स्क्वायर या लिखिपर एक्स माइनस 2 रो होल स्क्वायर एंड y माइनस माइनस 9। सो वर्टेक्स इज एट 2 एंड माइनस 9। तापर जदि कहवा ये जो पैराबोला अच्छी या ये एक्स एक्सिस रे को पॉइंट रे कट करछि आ वाई एक्सिस को को पॉइंट रे। तो देखिया पई एक्स एक्सिस वाई रो वैल्यू कौन हम 0। तो आम देखिपर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 दैट इज 0 देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आसला x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ हम x माइनस 5 एंड x प्लस 1 implies 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 माने ये जो पैराबोला आमर तैयारी हम सीटा एक्स एक्सिस को एक्स इक्वल टू 5 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 ये दुईटा पॉइंट रे कट कर। तो आउ वाई एक्सिस को कौटी कट कर वाई एक्सिस को तो वाई एक्सिस रे हम एक्स इक्वल्स टू 0। सो एक्स इक्वल्स टू 0 जदि हम आमर वाई रो वैल्यू हम 0 स्क्वायर माने 0 माइनस 4 इंटू 0 माने 4 इंटू 0 माने होची 0 4 इंटू 0 माने होची 0 तापर माइनस 5। सो यहाँ हो माइनस 5। सो या आम जब प्लॉट करवा ताले एटा हम टाइप रो y x। तो ये आम देखले कि वर्टेक्स कौटी अच्छी 2 माइनस 9 ये जदि आम पॉइंट देवा y x। तो यार वर्टेक्स कौटी अच्छी 2 माइनस 9 जदि या आम लिखा 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
this is -9 and 2 is this. So this point 2 -9, this will be the vertex of the parabola. तो आउ एक्स एक्सिस को पॉइंट कट कर 5 x = 5 1 2 3 4 5 टा हूँ 5 0 2 -9 यहाँ हूँ -1 0. तो पैराबोला ये कट कर कट कर वाई एक्सिस को कौटी कट कर ना y = -5 1 2 3 4 5 यहाँ हूँ -5. सो ग्राफटा केमती हम ना ये आसो ये वाई को कट कर वर्टेक्स हूँ ये. तो तापर डिक्रीज होगी जीवंती. ये डिक्रीज हो ये तापर -5 रु 2 -9 को डिक्रीज हम पैराबोलार इक्वेशन अनुसार पैराबोलाटा ये टाइप हम ये बढ़ीज एपटे ये बढ़. सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर x² - 4x - 5. या आम कौ आ गोटे कौ टाइप कर ना आम या कर कि यार प्रथमे तो यार जो ये फंक्शन रो मिनिमम वैल्यू कोटा ताको देखिवा. ठीक है. नेक्स्ट y = x mod. तो आम y = x mod रो इक्वेशन केमती डिफाइन करि परिबा. इट विल बी डिफाइंड एज x mod will be +x for x greater than 0 and -x for x less than 0. So it will be like this. Y x and इटा हूँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y = mx + c. जदि आम कह ये इंटरसेप्ट जो c हूँ 0 एंड स्लोप इज 1. सो आम जदि ये जो लाइन टा ड्र कर y टाइप आसो आउ ये लाइन टा x एक्सिस सहित केते एंगल फॉर्म करिवो सेटा जानिबा हेले थीटा विल बी tan inverse y/x. Here that is for x greater than 0 tan inverse y/x will be x/x, that is tan inverse 1 and that is 45 degree. So this will be 45 degree this. तापरे जदि x लेस देन 0 पे हमें देखिवा तेबे tan inverse y हबो -x/x will be tan inverse -1 and this will be 135 degree. So इटा हबो ये एंगलटा 135 degree. So इटा हबो ये टाइप रो ये एंगलटा हबो 135 degree. So इटा हबो ग्राफ फॉर y = x mod. Then y = x of x mod. इटा केमती हम या को आम एमती डिफाइन करवा कि x will be x and x mod will be defined as this. So x it will be x² + x² for x greater than 0 and -x² for x less than 0. सो या को आम एबे केमती करि परिबा ना आम जानिछु कि आम पूर्व गोटे क्वेश्चन आम डिस्कस करथिलु कि y = x². एटा होची पैराबोला इक्वेशन आउ आम या को केमती प्लॉट करथिले ए टाइप रो माने
y x ये जो कोफिशिएंट x रो कोफिशिएंट होची पॉजिटिव सो एटा हबो अपवर्ड ए टाइप रो आउ जिते बेले y इक्वल्स टू -x² हबो तो एटा हबो डाउनवर्ड पैराबोला जेहेतु x² रो कोफिशिएंट होची नेगेटिव आ सेटा होची -1 तो ये आमर y इक्वल्स टू 0 रे x इक्वल्स टू 0 रे y भी 0 होबो सो ओरिजिन होबो ई जगहटा ये ओरिजिनटा होबो तार वर्टेक्स ओके तो आमे x ग्रेटर देन 0 पाई x² नेले ई साइड रोटा नेबा आमे कोन पाई ना ई साइडटा होची x ग्रेटर देन 0 सो आमर ये जो ग्राफटा केमते होबो इट विल बी लाइक this is y, this is x, and this will be 4x greater than 0, 4x greater than 0 it is plus x square, so the graph will be like this and this is half. तो ये जो x equals to 0 रू पॉजिटिव साइड जो ग्राफटा अच्छी से टाइप रो हम पैराबोलाटा हाफ पैराबोला this is like this and 4 negative half that is x less than 0 it will be like this for x negative this side is x negative so this part will be come into the graph this will like this so this will be the graph for y equals to x into mod of x now discuss करिवा y equals to x mod x या केमती डिफाइन करि परिबा इट विल बी डिफाइन एज दिस इज 1 for x greater than 0 and -1 for x less than 0 तो या केमती प्लॉट करि परिबा हमें तो x greater than 0 पाई 1 y रो वैल्यू होची 1 धरा जाओ एटा होची y रो वैल्यू 1 x रो वैल्यू 1 -1 तो x ग्रेटर देन 0 पाई ई साइड रे पॉजिटिव साइड रे y रो वैल्यू होबो 1 माने दैट इज कांस्टेंट वैल्यू सिमिलरली फॉर x लेस देन 0 दिस साइड y विल बी -1 सो दिस इज -1 आम देख परिबा कि ई जो ग्राफटा डिसकंटिन्यूअस है पॉइंट रे x इक्वल्स टू 0 रे आउ इटा होची -1 इटा होची 1 और ये जो डिसकंटिन्यूटीटा केते आमे जदी कोइ परिबा यारो स्ट्रेंथ होबो डिसकंटिन्यूटी 2 okay then we'll discuss this graph and this is known as greatest integer function how can we define it like if x is lying in between and n plus 1 then x will be that is function y that will be n तो यहाँ हूँ तार डेफिनेशन ये जो आम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डेफिनेशन हूँ यहाँ तो आम जिते बड़े एक्स रो वैल्यू 0 रू 1 नेबा तेबे एक्स mod that is y कौन होबो 1 sorry 0 that is according to definition of the greatest integer function so यहाँ होबो 0 जमते ये देखि परिबे कि एक्स रो वैल्यू जदि n और n प्लस 1 भितर लाई करूची तेबे एक्स रो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स that will be the least value possible that is least integer that is n so x रो वैल्यू जदि 1
ଆଉ 2 ଭିତରେ ଲାଇ କରେ ତେବେ x ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା 1। ସେମିତି 2 ଆଉ 3 ଭିତରେ ଯଦି ଲାଇ କରେ କ'ଣ ହେବ 2। ସେମିତି -1 0 ଭିତରେ ଯଦି ଲାଇ କରେ ତାହେଲେ ହେବ -1। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲଟ୍ କରିବା ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏଟା ହେବ y x then 1 2 3 1 2 3 1 2 minus 1 minus 2 minus 3. So first x is in between 0 to 1, between 0 to 1 y will be 0. This is this. Then for value of x, if value of x lies in between 1 to 2, then value of y will be 1. This is for 1 to 2, value of x, y will be 1. Then if value of x is between 2 and 3, then value of y will be 2. Then -1, if value of x lies in between -1 and 0, then value of y will be -1. Similarly, this will be like stairs. So this is the graph of y equals to greatest integer function of x. Next we will discuss graph of ln x and log x. So basically ln x is log base c x and log x is log base 10x. So if we try to write it, then we can write it as x equals to e to the power y, and this is x equals to 10 to the power y. So now try to plot these things individually first. ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି କରିବା x equals to e to the power y, then କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ ନା at x equals to 0, y equals to -infinity. Like if x equals to 0, when x will be 0, x will be 0 only when e to the power x will be 0 when it is 1 by infinity. So when it will be 1 by infinity if y is -infinity. So y will be -infinity for this case, and then at x equals to 1, okay, let's try to plot this first. E to the power y at x equals to 0, what will be y? Y will be like this will be 0 only when this side will be 1 by infinity, and it will be 1 by infinity if and only if y is -infinity. So in this for x equals to 0,
y will be minus infinity. Then at x equals to 1, x equals to 1, e to the power y will be 1. And when this will be 1, if and only if y equals to 0. So at x equals to 1, y will be 0. At x equals to 0, y will be minus infinity. Then at x equals to minus infinity, सो आम या देखिए प्लॉट करि परिबा. सो आम या देखिए प्लॉट करि परिबा कि एट x equals to 0, y will be minus infinity. Like from this side it will be started. Then at x equals to 1, y will be 0, this point. So it will increase like this, and by crossing this it will go like this. Okay, this will be the graph for y equals to ln x. तापर आम जदि प्लॉट करवा x equals to 10 to the power y रो ग्राफ, then at x equals to 0, y will be same minus infinity, because जदि 10 to the power minus infinity हो then only x रो वैल्यू 0 हो. So then at x equals to 1, so at x equals to 1, y will be infinity 0. So it will also be like the same, y x 1 0 infinity 0 minus infinity रो आसीबो बॉडी की एपटे जीव. देन जदि आम दुईटा ग्राफ को गोटे जगार प्लॉट करने चेष्टा करवा, देन व्हाट इट विल गिव, दिस इज x, y, दिस इज x. इटा जदि 1 0 पॉइंट है, देन आमर जो आम जदि कंपेयर करने चेष्टा करवा, ताले गोटे वैल्यू आमको कैलकुलेट करने को पड़ो कि आम जो दुईटा को कंपेयर करने चाहिए, ताहले आम धरा जाऊ गोटे एक्स रो वैल्यू किसी सॉरी हाँ एक्स रो वैल्यू किसी भी गोटे नेबा कि x इक्वल्स टू 10. जदि आम दुईटा को कंपेयर करने चाहिए, धरा जाऊ आम गोटे वैल्यू नेबा कि x इक्वल्स टू 10 रे आमर जो e टू द पावर y केमिति वेरी करुचे. तो x इक्वल्स टू 10 रे आमर जो e टू द पावर y होबो सेटा होबो 10. देन y विल बी लाइक एबे जदि आम दुईटा को गोटे जगह प्लॉट करने चेष्टा करवा, तो आमको दुईटार वैल्यू को कंपेयर करने पड़ो कि e टू द पावर y सॉरी ln x आउ log x
ଦୁଇଟା ଭିତରେ ln x ଆଉ log x କିଏ ବେଶୀ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଉଛି at x equals to 10. ସୋ ତା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ଲଟ୍ କରିପାରିବା. ତ at x equals to 10 e to the power 10, then if e to the power y equals to 10, then y will be ln 10, and log base c 10 means 2 to the power 3. Then if 10 to the power y equals to 10, and it will be like y will be log base 10 and 10. This will be 1. So y ର value at x equals to 10. ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର graph for y equals to ln x, and ଏଇଟା ହେଉଛି y equals to log x. तो ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବେଶୀ ହେଉଛି, y equals to ln x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବେଶୀ ହେଉଛି at x equals to 10. ସୋ ଇଏ ଉପରେ ରହିବ, ଗ୍ରାଫ୍ ଆସିବ ଏଇଭଳିଆ, y equals to ln x ର ଗ୍ରାଫ୍ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଇଏ y equals to log x ଗ୍ରାଫ୍ର ଉପରେ ରହିବ at x equals to 10. ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି y equals to ln x ର ଗ୍ରାଫ୍, ଦେନ୍ ତଳେ ଆସିବ y equals to log x ro graph, because at x equals to 10 y gives, this y gives lesser value than this y. So this is the graph for ln x and log x. And thank you for watching. If you found this video helpful, please consider subscribing to this channel, and let me know which topic you would like me to explain next.